resume recording. Now you see, this is the model which I have created, is the time series analysis, and this is my prediction. But this graph is too much different. The actual values are too much different. Now I will show you that interactive graph so you could better understand that. This is my interactive graph. I will show you. You will see. So here, if I put my cursor, you will see I will get the actual and predicted. This is my predicted. Okay. So it was the my prediction for third. My predicted was 1.57. Okay, into 10 to the power 7. 15 lakhs something my prediction was. 157 lakh, 1 crore 57 lakhs. My prediction was. But actual cases 2 crore 3 lakhs. Okay. So whenever I will switch my cursor, I will get the different data points. I will get the different. Okay. Previously, my prediction was very good. But now, as you know, that it is very high hype in within a month. So prediction may not be as good as B. Okay. So it is the time series analysis I have. It is the simple analysis I have done. We could do the more, we could tune this time series analysis and we could improve our prediction. So this is my first interactive. Then I will show you some more thing. Sir, sorry to interrupt. I mean, I second with Ritya because being a non-technical background, मेरे bouncer आ रहे हैं सारे. मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है. Okay. तो मैं खाली आपको ये बता रहा था कि ये किस प्रकार से आर का जो कोविड-19 का हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या-क्या किया जा सकता है. Now I will tell you the basic. Point taken. हाँ, yes, बिल्कुल सर. Basic से अगर थोड़ा सा हल्का सा theoretical वगैरह चले, then we can come to this climax. Okay. देखिए सबसे पहली चीज जब भी हम वी स्टार्ट द आर वी हैव टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट so there are the various project you are working simultaneously so sorry sir R is the bible of all these things जो हम लोग आगे करेंगे या पढ़ रहे हैं हाँ ये सारा काम R के ऊपर ही होगा R पे रहेगा फिर पाइथन पे भी हम लोग इसको करेंगे R के बाद ओके क्या होगा कि पहले एक लैंग्वेज को R पे क्या R ज्यादा इंटरप्रिटेबल है आर से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो काफी अच्छे मिलते हैं मतलब काफी उसके अंदर हमें रिजल्ट्स में आउटपुट मिलते हैं तो हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं पाइथन में कुछ लाइब्रेरी तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है काफी पॉइंट्स देता है रिजल्ट्स में पर कहीं पर हमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं बहुत कम वैल्यूज हमें प्राप्त होती हैं रिजल्ट में तो वी कुड नॉट इंटरप्रेट इट इन प्रॉपर वे और पाइथन इज लिटिल बिट टफर देन आर इज वेरी सिंपल लैंग्वेज ओके अभी मैं आपको शो करता हूं कैसे इट वर्क्स सो देयर आर बेसिक 5 data types in R. So first data type is a vector. Whenever you have to write a comment, you just put a hash and you write whatever you want. So it is the vector is our first data type. Okay, so we are studying about the data type. Every programming language has its own data types. Mostly they are same, but their name may be different and some functionality may be different. So what is vector? I explain you. Second data type, first I tell you all the data types name. Second data type is list. Third data type is matrix. Fourth data type is arrays. Fifth data type is data frame.
So these all 5 data types you will try to understand. And in R, the first window is the script window, which I will take from here. And this is my console where I will get the output. Okay, this is my global environment. Whatever the object I will assign, I will see what is the value, what is the thing I have assigned to that object. Okay, so first I am creating one vector, which is x is equal to 5, suppose. And if I put, if I just click the enter, it will not do anything. The cursor will go to the next row. But if I want to run this script, then I have to put my cursor on this script and I have to click this button run. So you will see what will happen. If I run this, it will be in my environment now. It is called the global environment and x is 5. It is assigned. Whenever I will ask what is x, if I just write the x, it is the case sensitive language. So you have to keep something in the small x, then you have to use the small x. If I run this, I could either use this run button or I have some short key, which is the control then enter, control enter. You could note it down. So x is 5. It is showing me. Now I am putting y is equal to 7. And I run this. Control enter with. So you see here y is equal to 7. And second thing is this is a vector, as I told you. So we want to see whether it is vector or not. So we have some function by which we could determine, we could find out what is it. So there is dot, we could write anything, is dot array, is dot vector, is dot character, whatever. So I am just asking is dot vector. So it will give me the logical response true and false for x. So x is vector or not. So I'm asking, so it is giving me true. It is vector. Okay. Same thing I will ask for y. And I will get it is vector. If it is vector, I will tell you the properties and the vector later on. And there is various type of atomic vectors. So we'll see that through the class, we could see which sort of vector is this. So if I ask about the class, I will get the numeric. This is a numeric vector. Numeric vector means I could perform any mathematical operation here with this sort of vector. If some vector is a character, I could not perform the mathematical operation there. Okay. So that is very important. If the vector is numeric, then you could perform any mathematical operation. Okay. So if I perform x plus y and I run this, I will get 12. Automatically it is working. X minus y, I will get -2. X into y, for multiplication, I have to use the asterisk sign symbol. And for the power, suppose I want x to the power 2. So I have two options. So it is 25, 5 to the power 2, 25, or I could use the double asterisk instead of cape. If I want to divide x by y, so I will get this. Here you see we are getting so many numbers after decimal, digits after decimal. So if I want to round it off, so we have a very simple function round, and just put after comma how many digits you require after decimal. So I require 2, I will just write 2, so I will get the 0.71. If I write 3, I will get the 3 digits. Okay. So in this way, I could do this. So these are the basic functions. One function is more. If we divide y by x, so we get 1.4. So if I want to know, I want to find out the remainder. What is the remainder over there? If I divide the 7 by 5, I will get the 2 as remainder. So there is a function y % x. 2 times I have to use the percent sign. I will get the 2 as remainder. Sometimes they require the remainder only. So we could use this function. What is vector basically? I will explain you. Vector is the column in your Excel sheet or your CSV format file, whatever the column is a vector.
here in the data frame, every column is a vector. Okay. So in the column, you say there is no only one element, there may be more than one elements in a data set. So how we could create the multi-element vector, I will explain you. So there is a one more assignment symbol besides equal. We could use the alt minus. So we get this sign, assignment symbol. And if we have the more than one element vector, then we have to use the small c. C is for combine. And then a small bracket I will put, and I could write many numbers as I want. Okay, and I run this. Now you see X is the numeric vector. 1 to there are 6 elements in the square bracket. It is shows us the length 1 to 6. First, second, third, fourth, 5, 6 elements are there. If I just put the X and I will run it, I will get the 2, 3, 2, 1, 0, 5, 8. I am also making another vector Y, which is of the same numeric type. Sorry, point I have taken. The same length I am taking, the 6th length. And if I ask, this is my Y. If I do the X plus Y now, so I will get this. So correspondingly, it will add the numbers. 3 plus 1, 4, 2 plus 5, 7, 1 plus 2, 3, 0 plus 8, 8, 5 plus 4, 9, 8 plus 3, 11. So you will get this corresponding. If I increase one number here, not increase, I decrease one number here. And I run this again. So there are 5 numbers. And if I again do the X plus Y, I will get some warning message. X plus Y longer object length is not a multiple of shorter object length. Okay. So longer object length is a 6 and the shorter longer object length is 5. So it should be either equal or the multiple of this. So if I increase the 4 element here and I run this, there are 10 elements in the X and the 5 elements in Y. And now if I do, I will get the summation. So what will happen? It will add the first 5, then it will shift here. Okay, then again add it. Does that make sense to you now? So we can also do everything in Python. But is there a reason that we're choosing R for this course to begin with? Because the R is language, there are the difference in the Python in R. The basic difference is that R is the easiest language. Both are the open platform. Okay. Mhm. And second thing is that the data analytics, the language of data analytics is R, and the language of data science is Python. Understand? So there is a major difference. Now in Python, there are a few libraries, few packages are there, which are making them very easy for the data analytics also. So R is easy. The terminology in R, you will see, is very easy. You don't have to read the concept of OOPS, object-oriented programming language concepts are not required here in R. But in Python, we have to study that. Okay. So non-technical person will get some problem in the first time with Python. If you learn first R, you could easily understand the Python later on. Is it clear now? Yes. Can I ask one more question? The 3-month schedule that you have, is Yeah. there a way to know what all will be covered and like a Okay, little bit of timeline? I sorry. Just a moment. I just take that curriculum. Are you getting my screen? Yes.
ये हम लोगों का लास्ट ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोर्स के लिए किया था कि छोटे छोटे हम लोग बैचेस लेते थे R1 R2 R3 R4 क्योंकि पीपल वर नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट इन वन शॉट। सो ये बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 80 और 100 पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे। ये अभी हमने बंद कर दिया है। अब हम छोटे बैचेस 5 to 7 पर्सन्स के बैचेस जो हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। सो ये पूरा कोर्स एसेंशियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आर बेसिक्स, यूनिवेरिएट एनालिसिस, then data visualization with R, data preparation with R, inferential analysis, hypothesis testing, PCA, principal component analysis, factor analysis, then linear regression. Here the machine learning will start. Logistic regression, lasso rich elastic net regression. This is the regularization for that. Segmentation and clustering, then decision tree, random forest. Now, this is also some predictive modeling, machine learning modeling, esteem gradient boosting, algorithm, time series analysis, support vector, machine k nearest neighbors, and naive base. This all we will cover in R. Similarly, the same thing we will cover in Python also. So essentials of statistics we have written, we have already covered here, so we will not cover here now. Python basics we will start with. Python essential packages, NumPy, Pandas, exploratory data analysis, data visualization, Matplotlib, Seaborn. Okay, Bouquet is also there. Inferential analysis with Python, PCA, factor analysis, SciPy and states model we will use. Then OOPS concept would be there. Data preparation, feature engineering, feature tools, this all would be there. ML package, scikit-learn, linear regression, logistic regression, lasso, ridge, elastic net, segmentation, clustering, we will cover over there. And the same thing, the decision tree, random forest, everything we will cover what we are covering here with Python also. So NLP and deep learning is not. No, deep learning and NLP are the part of data science. We are talking here about the data analytics part first. You see, do you have a separate course for it will be separate after this. That is a separate course for the data science where we will study about the NLP and the deep learning, RNN, CNN, everything. So that is for the data science, because some of you are academician, they require only the data analytics and the machine learning with R. You see, the topic is just we have given this, the title of this workshop, data analytics and machine learning with R, and data analytics and machine learning with Python. So that is a data science. Deep learning, NLP would be the part of the data science. You really think a non-technical background person will be able to cope up with all this stuff? I mean, yeah. No, data analytics is better for non-technical. Data science, there is a requirement of some technical background. It would be better in the data science. okay. But if you learn the data analytics first, then later on, after practicing it few months, you could enter in data science field later on, because you had lots of knowledge about the programming language and this all. Then you could switch to that in the data science. So initially, we don't say that the non-technical person could read the data science. So I have a question. Yes. Prerna this side. See, if just to brief you about myself, that I've been dealing into sales and marketing quite a long. Yes. So I right now opting for this course is just to enhance the skills over and moving towards the analytical part. So to be very honest, like I hold a BTech degree in electronic and communication, and but I'm not so strong in the languages or So how it gonna be like to be very like frank, I want to ask you that it would be easy, like how I'm gonna help it in my career for this thing, like how it's gonna help me, how it's gonna put an add-on feature, and whether I would be really able to apply it on, like if I talk about simply on I generally make the datas of my client and in the market analysis, moreover related to my product line. So now how it gonna help me out that by using this tool, how I'm gonna do it, I mean getting into the analytical part. The marketing, there is too much scope of this analytics. You could see suppose you have
many area sales manager, and there are some wholesalers and agents are also there. How we could do the analysis for as per the area sales manager performance, and as per the population where your product is being used, like the average income of the population, the extraneous data we require sometimes for the analysis in the marketing field mostly. Whatever the data your company is generating, your ERP or whatever is generating, that's okay. But sometimes we require some extraneous data we could get through the some APIs, through the sensors, and these all the average income in that particular area, and then you could decide whether our sales, how we could increase our sales over there. So there are many sort of analysis we could do with the Okay, marketing. like it's gonna be a total shift from, you know, what traditional sales and marketing we're doing to the analytical part, if I'm not Yeah, wrong. now the most of the MNCs are doing the same thing. Okay, okay. Like the Vico, which I have joined, I am consultant over there. They have started their own data analytics department. Okay, so they have recruited two mid-level data analysts there, and every MNCs wants, because the data is generating very big quantity everywhere in all sort of industries. They require to, without, they know that if we don't use this data, it is garbage for them. So everybody wants to develop, open their own data analytics department, and they could utilize this data and they could take the decision, they could improve their sales. Okay. 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 Thank you. So So do you have a course on using data from, let's say, spreadsheets and using tools like maybe Tableau or Power BI to? yeah, we will cover, we will read the data from CSV format also. We could fetch the data from MySQL, from the But not warehouse. using Python, but using tools like either Power BI or Tableau, where the focus is more on visualization and insights. So Not Tableau we will cover Tableau also, but Tableau is not a very big tool. It's a very small tool, drop down. So we it will cover within 2 or 3 days. We'll take that this also in this workshop. That's not a problem, because we generally use Tableau for data visualization. Right. Okay, it's not a tough tool. It's like the Microsoft Word, easier than Microsoft Word. Tableau is. So you could also do the market basket analysis and the whatever different sort of marketing analysis we could perform through this. Just a moment, I could also show you that. Like the market segmentation we could do through the marketing this data analytics and dimension and market analysis, market basket analysis, this sort of analysis we could do with this. Okay. Now we continue our session now. Where yes, we were. we can. Yes, sir. Okay. So this, you see, the command is very simple. I will just give you one demo how to read the data here. Okay. How we could perform the analysis. So I take one data here. Data set, just a moment. I fetch one data. Suppose there is one census underscore data.csv file I have. So I want to read this file here in my data set. Okay. Either I have the Excel sheet or I have a
this sort of file. So I will give some object name to that data frame. It may be very small. It should be very small, not be very long object name. We have to use again and again later on. So I just give the MD. MD is the short abbreviation of my data, and data frame DF also we could use them, any other whatever you want. And it is a CSV format file. So we have to read .csv command we have to use here, because we are using the CSV. We want to read the CSV format file. And there is a, in quotes, we have to write that file name, census underscore data. And the extension is compulsory, CSV. If I run this, I remove this thing from here, so you could better understand what we are doing now with this new. So I run this, you will see this data is not now in my environment, and 8,786 observations in my data set and 80 variables are there. If I want to see this data, I will just click here. I will get this data, assembly and state, county, ST name, city name, year, and whatever the variables are there, I am getting this. In this way, I could read the data. Now, I will take one simple data, which is in default in R. So you could better understand the operation of that. So that data name is empty cars. Okay, so I am taking the empty, and that is the in R itself. So I will just write the name empty cars. So it is in default in R. So I don't have to use the read.csv and these all things. And I read this data, empty cars. So empty cars data, you see 32 observation and 11 variables we have. You will see these are the car models name, and this is the mileage of the car, cylinder, number of cylinder, displacement, cubic inch, horsepower, gross horsepower of the car, draft, weight of the car, gross weight in 1,000 pounds, QSEC, VS vertical and the V-shaped and state engine. Two types of engine are there. AM is for the gear transmission, automatic and manual, number of gears and number of carburetors. So how we could get this information, because we are getting the data from default R. So I will just what I will do, I will just put a question mark and I will write the empty cars, and I will just run this. You will see the detail of this data. Okay, it is in default. So it is the data was extracted from 1974 Motor Trend US magazine, and 10 aspects with automobile with fuel consumption. So 11 variables we have. So all variables are numeric. MPG, number of cylinder, displacement, horsepower, draft, weight, QSEC, and everything is given. The transmission 0 for the automatic, 1 for the manual, and this way it has given everything. So you could understand the variables of the data. Now, whenever we get this sort of data, you read any data, first you see the structure of data. That is the str. The command is very simple. Str for the taken from the structure word. And I will just write the object name, that is the empty, and I run this. So you will see this is the structure of data, 32 observation, 11 variables. These are the variables name, and this is the class of the variable. All are numeric. So when we read the data, first we do the exploratory data analysis. We explore the data. There are 11 variables, so we have to explore the 11 variables. So look at here in the VS and AM. These are the binary data, 0 and 1 only. So we could convert them in category form, categorical data in a character. So you know that AM, so 0 is for automatic and M is for 1 is for manual. 1 is for manual, 0 for automatic. Similarly, in the VS, if you see 0 for V-shape and 1 for state. So we convert this. So there is very simple way. Whenever we read data, it is not as per our analysis purpose, because it is taken from the business process. So we have to do some manipulation in the data.
like this. So I am doing empty. When I put the dollar, I will get the all variables name in the drop down menu. Then I have to select which variable I want to use. So I'm using the VS. Okay, but I want to give the new name. And VS is just the V saved in the state. So it is basically the type of engine. So new name I will write, or the type of engine I want to give some space between type and off and engine. So what I will do, I will use quotes. Then I will write type of engine. If it is a single letter, then I will write it directly. Okay, this is the new variable I am going to create in this data frame. And how I will create this? So it would be, I will use one conditional statement, if else my empty $VS in the VS column, wherever there is 0, it should convert in V saved. Okay, V saved. And there is other thing is 1. 0 is assigned for V saved and 1 we will assign for manual. So other would be manual automatically. I don't have to mention the 1. No, rest would be manual. So if I run this, you will see there are 11 variables. Now there are 12 variables. If I show you, so type of engine, V saved and manual. So you see here the 1 is manual and 0 is V saved. Got it? So this is now, I have done this, and same thing I will do for gear transmission. Okay, so that is also 2 letters or 2 words are there. Gear transmission. And just have to if else function I have to use. So this I will explain you this and everything, the if else conditional functions, and these all we will learn in our workshop. So empty dollar, sorry, MD I have written, empty dollar M equal to 0 will convert an automatic, and the remaining will convert in manual. Sorry, the previous, the V saved in the state, it was the state engine. Sorry, I have taken that. I'll do this, and I done this. Now I'll show you this. So this is the V saved and state in the manual and automatic. So these 2 columns are not useful for me now. So I will remove these 2 columns. It's very easy to remove from my data frame. So what I will do, I have, without using any library, if I want to direct through the R basic, I want to remove this. That is very simple. VS null in capital. And another column I am also removing, empty $M. Sorry. Null. You see there are, again we have the 11 columns, and that 2 columns are not, those 2 columns are not there. Now I will show you the structure again. You see these are the character. Got it? These are the character. So first thing, we have converted for numeric column, binary column in a character format, and now remaining numeric column we have to decide which one is discrete or which one is continuous. Okay, so 2 sort of numeric columns we have, the discrete and continuous. So how we could judge it, which one is numeric and which one is discrete. So we see through the unique values. So we have a unique function here. How many unique values are there in that particular column? If I run this for mileage, so you will see I have, out of 32 observations, I have 25 unique values. There are many unique values I have.
So it is continuous. Second column I will see. You see there are only 3 unique values, 4, 6 and 8. So this is a discrete variable. Cylinder is a discrete variable. Now, the thing is that whenever you get some discrete variable, now one decision making comes here. You have to take the decision very carefully, whether we have to treat it as a numeric or we have to convert them in category, in the character form. So you see the 4 cylinder, 6 cylinder, 8 cylinder. So these are some order. Okay. So there is some order. So we could keep it as numeric. There is no need to convert these in categorical formats. Number has its own importance. 4 cylinder, 6 cylinder, 8 cylinder. Okay. So it has some mathematical importance. So arithmetical importance. So we could keep it as numeric. We don't convert these in that format. Similarly, for the number of gears, if we have so many. Number of carburetor, weight is already numeric. That is a continuous already. So cylinder we treat as a it is a discrete but numeric. Okay, we have the discrete, numeric, and we could convert the discrete in categorical also. It depends on the variable. So this we have seen. We have understand. Now we try to understand each and every variable. The first variable I will try to understand. So one by one, if you try to understand, it will get very long time. If you want to see the mean of first variable, you will write the empty dollar mileage. You'll get the mean of that particular variable. If you want SD, you could write the, instead of mean, you could write the SD, standard deviation. You'll get the standard deviation. If you want the median, you will get the median. But I want all the statistics all together for all the variables. I don't want to write the more commands. So there is one summary function which will provide us only 6-point statistics. Okay. So I will just take the statistics of the whole data. So you see the first mileage, I have the minimum mileage is 10.40, first quartile 15.23, median is 19.20, mean is 20.09, third quartile, and the maximum. Similarly for the cylinder, but cylinder are an integer, so mean is not important here. Displacement you will see numeric, horsepower, torque. But here if you see these two columns, so it is giving us the 32 is the length and it is the character class and the mode, but we don't know how many are the word VSEPT, how many are the stat engine. We don't know that thing through this. So we could make a table for that. One option, we have various options. I will explain you that. So empty dollar type of engine. You will see we have the state engine. 14 car have the state engine and 18 have the VSEPT engine. So in this way we could see this. Otherwise we could convert this in factor. Whatever the character, we could convert them in factor. So like empty dollar type of engine, I will just s dot factor if I write empty dollar type of engine. So now I will show you first the structure. You see the type of engine now factor with 2 levels, state and VSEPT. State is the first level and the VSEPT is the second level. Okay. And now if I see the summary again, you will see here in this summary type of engine, it is giving me the table. Previously it was not giving me the table. Sorry, for type of engine, because I have changed the type of engine only. I have not changed this gear transmission. So this is the 6-point summary. But if you require the more statistics, then how you will get it? So there are some packages. One of them is
Psych. PSYCH. Psych library, and the function is describe and empty. So you will see we are getting the 12 point summary now. This is the variable number, first variable, second variable. This is not a variance, variable number. This is the number of observations. The mean value of each observation is given. Then standard deviation, median. Trimmed is the mean between 50, mean of the 50% data between Q3 and Q1. Mean absolute deviation through median. Minimum value, maximum value, range, maximum minus minimum, skewness, kurtosis, and the standard error. So it is giving me. Here you see some the asterisk symbol is there. So it means that this statistics is not for this data. Okay, it is not reliable. These are the character basically. Okay, we have converted them in factor and we are using it. So this statistic is not useful for us whenever you get some asterisk sign. So altogether we are getting this thing. So first we have got this, the median and mean and this all, and then we see the data is normal or not. For that we could create one histogram and empty dollar mileage. You see it is the positive skew, and here also you will see the skewness is positive 0.61. The between minus 0.5 to 0.5 it is the normal data we consider, and above 0.5 we consider the positive skewed, and below minus 0.5 we consider the negative skewed. So if we talk about here, these are the, because it is a very there are only 3 categories, so it is not a continuous. We see only for the continuous. If you see the horsepower, it is the more positively skewed with this. I will see the displacement, which is 0.38. So we see whether it is look like normal or not. So this is the displacement 0.38. Okay. So through this we could understand the data. If it is skewed, then we have to go with median. Whatever the work we will perform, having the group median, that method should have the group median in the calculation. Then you could go for further analysis. So this is like that. Anything? Do you have any confusion here up to now? Yes. Sir, I have a question on the course fees. The table that you were showing, the which part of it the is the, that was because at this moment I'll show you that it was very at that moment we were charging. I think this one. At this moment we are only charging 10,000 in 3 months. Okay. There would be 90 sessions, 2 hours each. So there is 180 hours of study. And is it possible to attend like in sections? For example, if you attend the first one and let's say we need time to No, understand it is now, it is, we are not doing in the different workshop. It is the now the complete course we are providing. Okay. Because we have the 5 to 6 persons batch we are taking this time. It is the separate batch for the working people. So we just the complete course we will perform. We will provide along with this the assignment and data sets whatever required. And for the each topic you will get the data sets, scripts, assignments, everything you will get, and the recording, link of the recording. So whenever in future you could either download the videos or you could see on the YouTube whenever you want. So these all would be there, and the certification would be of the, you will get the dual certification. Okay. Data analytics
and business analytics. Both certification you will get over there. Anything else? Sir, I think before starting this course, first we have to brush up our statistical part. We will cover that na? In the essentials of statistics. We will cover that first. In first 3 to 4 days, we will cover the basics of statistics. Okay, and the classification of the data, then measure of central tendency, measure of dispersion, correlation analysis. And later on with the topic, like if you read the linear regression, so we will explain you first day the theory of linear regression, concepts of linear regression. Then we will next day we will start the practice. Understand? The statistical concept would be explained first. Later on we will start the topic. But the basic essentials of the statistics will be taught in first 3 days. So this would be like this way. Anything, any other doubt? Do you have? Yes. रित्या जी, कोई डाउट आपको? एग्जैक्टली मैं तो ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि इनिशियल लेवल पे आप देखेंगे, यदि आप दर्शक हैं तो आपको हर चीज टफ ही दिखाई देगी, है ना? इफ यू आर द ऑडियंस, देन आपको लगेगा यार ये करिश्मा कैसे हो गया, ये सर ने ये टाइप किया 2 मिनट में, सबको सर को तो सब रटा हुआ है। नो, देयर आर वेरी फ्यू कमांड्स वी हैव टू लर्न, वी हैव टू मेमोराइज इन आवर ओनली 27 to 30 कमांड्स। मतलब आप 25 से 30 कमांड के बीच में आपका पूरा एनालिटिक्स हो जाता है। और 25-30 कमांड भी कैसे हैं, जैसे भी मैंने डिस्क्राइब बताया आपको, है ना, स्ट्रक्चर बताया, STR, ऐसे करके 25-30 कमांड आपको दिमाग में रखने हैं बस, और इसी से पूरा काम होना है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा चीजें याद करना है, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स भी इतने ज्यादा नहीं है आर में कि भाई एट्रीब्यूट्स भी अंदर जो रहते हैं सिंटैक्स के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वहां पे। तो वो तो आप हर सिंटैक्स के साथ बताए जाएंगे कि वी हैव टू राइट दिस फर्स्ट, देन सेकंड एट्रीब्यूट इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जब तक आप करेंगे नहीं उस चीज को, तब तक आपको इजी नहीं समझ में नहीं है। बहुत इजी, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कैसा भी डेटा हो। जैसे मैं अभी एक डेटा पे काम कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सर इस पॉइंट पे ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इस पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्स फीस वगैरह इस तरह कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं, नॉट एट ऑल। आई मीन you're asking for a very small amount comparative to the delivery that मैं बता दूं, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया अभी। मैं अपग्रेड में मेंटर और एक्सपर्ट दोनों। नो सर, you have given सर, आपने बताया था शुरू में, है ना? तो वहाँ हम लोग 3.25 लाख रुपए ले रहे हैं, है ना, सेम कोर्स के। करेक्ट सर, करेक्ट, है ना? यहाँ उसके हिसाब से आप देखेंगे कंपैरेटिवली, तो वी आर नॉट चार्जिंग पीनट सर, पीनट, आई अंडरस्टैंड सर, बहुत कम है। लेकिन मेरा वही है कि अब इस स्टेज पे हम लोग हैं, तो जो मेरे साथ जो चीज है, दैट इज समथिंग व्हिच आई नीड टू लर्न सर। मेरे लिए सबसे बड़ा वो है कि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। हाँ, और अगेन मनी इज नॉट अ मैटर। अगर इरेस्पेक्टिव अगर मैं सीखने की होती तो शायद मैं अपग्रेड से भी सीख लेता इस चीज को। सही। बट अब ये है कि सर एक तो थोड़ा सा मतलब अभी जो भी आया ना मेरे सामने सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे पूरा बाउंस हुआ है, मेरे बिल्कुल बाउंस हुआ है, मैं कुछ नहीं। अभी क्या है कि अब वो एकदम से कोविड वाला तो नेचुरली थोड़ा सा टफ था, नहीं इसके बाद वाला भी सर, वो भी मेरे मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या है कि इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैंने सीधे से प्रैक्टिकल चालू कर दिया। फर्स्ट वी लर्न द स्टैटिस्टिक्स कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है और कहाँ कैसे यूज हो रहा है अपने, बेसिक कंसेप्ट है, डेटा क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग। अभी मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ कैसे आर में काम कैसे होता है,
अब जैसे ये देख लीजिए, मेरे पास ये एक डेटा सेट है जी। मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा इसमें। एक्सेल सीट है मेरे पास, मैं एक्सेल सीट आपको पहले दिखाता हूँ and you will see this Excel sheet I have got, and these are some government project है अभी मैं काम कर रहा हूँ जिस पे, और ये वहाँ मेरे पास डेटा आया गवर्नमेंट की तरफ से, डिंडोरी सभी जगह का, पूरा एमपी का है ना, एमपी स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या प्रोजेक्ट है, कैसा है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये मुझे कुछ इसका जो इन्फ्लुएंसर एनालिसिस का वर्क मुझे करके देना है। दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ स्केल, एक मोबाइल ऐप बना रही गवर्नमेंट, तो उसके लिए है ये। तो ये बच्चों को जो आजकल घर पे पढ़ रहे हैं ना, उनके ऊपर कुछ वो लोग रिसर्च गवर्नमेंट कुछ करना चाह रहा है उसके ऊपर। तो मैं जल्दी उसको बीमार पड़ जाता हूँ, पड़ जाती हूँ, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है। ये रिस्पॉन्स मेरे पास आए, मुझे इसकी रिलायबिलिटी मालूम करनी है, ये कितना रिलायबल है, ये जो टूल हम बना रहे हैं इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये सब चेक करने के लिए। तो आप देखिएगा मेरे पास एक सीट ये है और दूसरी सीट ये है, दो सीट उन्होंने एक कुछ समय बाद टेस्ट लिए, कुछ समय पहले टेस्ट लिए। अब उनको ये बोला गया था कि सेम लोगों पर ही हमें महीने भर बाद टेस्ट लेना है, और गवर्नमेंट मशीनरी है, आपको मालूम है क्या होता है। अब देखते हैं कितने सेम लोगों पे उन्होंने टेस्ट लिया होगा। तो ये दोनों डेटा को पढ़ने के लिए I have to run a library for the Excel data set. So this library I am running. Through this library, I could use this command. Okay. So there are two sheets you will see. First sheet, second sheet. Okay. Then I have converted this data in this format. है ना, मुझे थोड़ा सा अपना मैन्युअली करना पड़ता है। कभी भी अपन काम करेंगे डेटा सेट का, तो जरूरी नहीं है you could read this data in your R. And you have to select the data from here, and then you have to paste in some other, and you would write in this way. Okay. So it should be in a numerical, the simple way like this. Only the one column for the header and the other are the values. So this I have converted this. Then I am reading the sheet 1 and the sheet 2. So you see the sheet 1 I will read the in default. Whenever I run, I will get the sheet 1. So there are 1245 observation, 87 variables I have. So 3 variables is this and 84 are the questions over there. Look at this. There are 84 questions. So in this way, I could read that data. And the second sheet, I am this is the DF1 and DF2. I will read the second sheet. So there is 1015 observation, 87 variables. And then I see how many NA's value. You will see there are so many NA values. You will see those are empty. The sum of the students have not written anything. So I will see how many NA's are there. So there is 19419 NA's. There is 16352 NA's. So there are so many NA's are there, but I could not impute those NA's from my side because these are the responses got through the students. So I will remove those observations. So I will use the dplyr library for using this function. I will explain this whole thing in the workshop so you could better understand. Here it is just the trailer. So trailer always go fast. So df1 na.omit. So whatever the na values, those observations will be omit from data frame 1. It is the practical approach I am showing you. So because it is not running, because I have not run that library. Okay. Now I will run, then you will see. So there is only 657 observations I have. No? Without NA. In the data frame 2, if I see 358 observations. But in these observations, the students should be same in the sample 1 and the sample 2, DF1 and DF2. So there are different students, they have taken and they have sent me the sheet. And I am unable to do the test and retest I have to use here. And we are the same students, we require the second time. So if I do the inner join, I will explain you this whole thing in the data preparation. It is the part of data preparation with R. I am just showing you. So it is I am writing the inner.
and I run this, you see I am getting only 26 observations which are the name is common. Through the name column, you will see there is a name column by which I will, this is the key column by which I want to see. Okay. And if I show you this, so these are the name, the students which are in the both seats. So there are only 26 observation I am getting. सर आप जो दिखा रहे हैं शायद इस चीज से सबको डर लग रहा है। हम सारी थ्योरीज को क्या फ्रंट लोड कर सकते हैं कि जितने थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, चाहे वो विजुअलाइजेशन प्रिपरेशन रिलेटेड हो, आर को हम कितना लेट ला सकते हैं अगर हम स्प्रेडशीट्स पे काम करें काफी टाइम तक या टैबलू पे काम करें? क्योंकि एक डर है, ऑल्दो यस वो करने के बाद सब सीख जाएंगे और सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, बट क्या हम आर को काफी लेट ला सकते हैं ताकि जब तक आर आए हम थ्योरेटिकली और फंडामेंटली चीजों को समझ सकें, उसके बाद हम आर में थोड़ा टाइम। हाँ, क्या होता है कि इसका जो कोर्स करिकुलम बनाया गया है उसको बनाए इस तरीके से कि 3 दिन में हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझे, और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के साथ बेसिक्स आर के कंसेप्ट जो हैं, बेसिक कंसेप्ट मतलब बहुत 15-16 हमें आप समझना है। जैसे ये सब है ना कि भाई ये पाइप टू फंक्शन क्यों लिया, आपको नहीं मालूम होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे ना इसको। इनर जॉइन क्या होता है, एंटी जॉइन क्या होता है, सेमी जॉइन क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझना आर के साथ जरूरी है। तभी तो आप 2 डेटा फ्रेम में उसको मर्ज कैसे करेंगे। कई प्रकार की मर्जिंग होती है डेटा की। आपके पास 50 डेटा फ्रेम्स हैं, मान लो CSV फाइल आई आपके पास 50 स्टेट से या 50 डिस्ट्रिक्ट से, आपको उनको मर्ज करना है। आप कैसे मर्ज करेंगे? तो वो सब चीजें आर बेसिक, और उसके साथ कंसेप्ट और दोनों चीजें, और हर सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग स्क्रिप्ट इसके साथ देते हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ, एक सेकंड यहीं अपलोड करता हूँ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट भी बहुत डिटेल में है, आपको स्क्रिप्ट से ही काफी कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप एक बार देखने के बाद जब आप पर्सनली उसको करने बैठेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नहीं यार ये तो बहुत इजी स्क्रिप्ट्स हैं। जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है सर, ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये सब कंसेप्ट्स कि वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स। तो वेक्टर्स आर द मोस्ट बेसिक आर ऑब्जेक्ट विच आर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एटॉमिक वेक्टर्स। एटॉमिक वेक्टर्स एंड क्लास, तो ये सब इसके अंदर एवरीथिंग इज गिवन। When you want to create a vector with more than one element, you should use C function, which means the combine the elements into a vector. So these scripts with would be with you always. ये एक प्रकार का भानुमति का पिटारा बोलते हैं ना, ये वो होगा आपके लिए। So ये आपको हमेशा whenever you want to refer, you could just upload that script here in R, and you could keep it besides, and whatever the thing you read and copy paste in your whatever the script you are running, and you could do it. तो चीजें दोनों पैरेलल चलेंगी, सिमल्टेनियस चलेंगी। आप थोड़ा सा एक आध वीक का जब आप करेंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आर से घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम वो स्टैटिस्टिक्स को आर पे ही लेके तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने आ रहे हैं। भाई स्मॉल डेटा होता है, वी कुड परफॉर्म ऑन मैन्युअली, वी कुड परफॉर्म द थिंग, बट इफ यू हैव अ बिग डेटा, देन हाउ यू कुड परफॉर्म। आप देखिए ना, मैंने कितनी फास्ट क्लीनिंग के लिए कितना टाइम लगा मुझे डेटा को। मैं एक्सेल पे करता तो परेशान हो जाता, आर पे मैंने फटाफट कमांड लिखा और मेरा वो एक्सेल शीट भी मेरी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। एक्सेल शीट वैसी ही है, एक्सेल शीट जो मैंने एक्चुअल बनाई है वो वैसी ही रहेगी, वो वहां वैसी रहेगी, वहां कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जो कुछ भी चेंज हो रहा है यहाँ, मैंने जो इसको जिस नाम से सेव किया है DF1 के नाम से ग्लोबल एनवायरनमेंट में है, वहां चेंज हो रहा है। So sir, ये R वाला सॉफ्टवेयर we need to buy or install? नहीं, इट्स द ओपन सोर्स, Okay, फ्री है। इट वाज डेवलप्ड बाय रोक याका एंड रोबिल जेंटलमैन करके दो थे, आर से ही नाम है दोनों के।
उन्होंने इसको डेवलप किया था और it is only for the statistical analysis and later on they have developed for the data analytics and these machine learning and these all. और इसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया, पर उनका ये जो MOU साइन हुआ ये हुआ कि इसको लाइफ टाइम ओपन सोर्स रखा जाएगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट जो भी चीज खरीदता है उस पर कमाता है, फ्री में नहीं देता कभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर इनकी बात मानी और माइक्रोसॉफ्ट ने एक लाइसेंस वर्जन भी निकाला है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कि जहां वो डेटा की भी सिक्योरिटी देता है। पर यदि अपन यहाँ काम कर रहे हैं, यदि रियल टाइम डेटा पे मैं यहाँ काम करता हूँ तो मेरा डेटा उतना सिक्योर नहीं होगा यदि ओपन सोर्स के साथ कर रहा हूँ। हाँ, यदि मैं उनका लाइसेंसिंग वर्जन लेके ओपन सोर्स पे कर रहा हूँ काम, मतलब वो आर पे काम कर रहा हूँ लाइसेंसिंग वर्जन के साथ, तो मेरा डेटा सिक्योर रहेगा। बस ये खाली डिफरेंस है। और जनरली तो हम लोग ऑनलाइन काम करते नहीं इतना रियल टाइम में, हम लोग तो डेटा शीट में लेकर के वो फिर एनालाइज करके कुछ भी निकालते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत इजी है क्योंकि हमें यही स्क्रिप्ट लिखना है और वहीं हमें आउटपुट मिल जाता है, मतलब इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा आप लोगों को अभी शुरू में लगेगा कि भाई पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत रखती है कि कैसे मार्जिन देखेंगे लेफ्ट साइड का, है ना। तो सेम चीज यहाँ है, कोई भी नई चीज इफ यू ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग इट विल टेक लिटिल टाइम। मुझे 6 महीने लगे थे सीखने में, आज से 12 साल पहले, जब कोई भी आर, MP में तो कोई जानता नहीं था आर क्या होता है। आई हैव टॉक टू सो मेनी IT प्रोफेशनल्स कि I want to learn R language, somebody could help me. They told what is R? Nobody knows about it. They knew about the Python, but they don't know about the R. So I purchased the books and I downloaded the PDF. There were no videos on R on the internet at that time, not a single video. And I learned myself because I was also not from the IT background. I am a mathematician. So it took 6 months. Daily I was spending my 16 hours daily. And then I started to train the people and this all. Now there are lots of stuff on the internet. सर आपके वो कार वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ये हमको ट्रक लग रहा है, ये भी हमको आर ट्रक लग रहा है आपके कार के एग्जाम्पल के हिसाब से। थोड़ा टफ है। नहीं, it's not a tough thing. It's easier than Python. Python से easy है, SPSS से जरूर मैं मालूंगा थोड़ा सा टफ है। आपने यदि SPSS यूज किया होगा, सभ्य जी, क्या आपने SPSS यूज? SPSS नहीं किया। IBM का टूल है वो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस वर्जन है। मेरी one of the organizations had SPSS, तो थोड़ा बहुत, but of course मुझे उसका I just know what data had to be taken out, but उस पे काम करना नहीं आता था। उसमें वो ड्रॉप डाउन है सब, और वो बहुत सारे मेन्यूज हैं, बहुत सी चीजें, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं उसमें कि अपन को समझ में नहीं आता कौन सा सिलेक्ट कर लें ना। तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। वो फिर क्या है कि वो एक प्रकार से वो पिवट टाइप से है ना, if I'm not mistaken। और उसमें अपन कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, वी कुड डू एनीथिंग, वी कुड मेक आवर ओन फंक्शन एंड वी कुड परफॉर्म द एक्टिविटी। that is the big advantage of programming language. We could create our own function ना। कोई भी चीज आपको कोई डनकन टेस्ट का कहीं भी नहीं है, बट मैंने खुद का एक फंक्शन बना रखा है डनकन टेस्ट का, तो मैं वो यूज करता हूँ, डनकन टेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब कोई चीज नहीं है और यदि मुझे उसका फार्मूला मालूम है तो आई कुड मेक माई ओन फंक्शन। आई डोंट रिक्वायर एनी हेल्प, मतलब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं कि ये वो डालेंगे। जब SPSS में तो है कि उनको लिखो, फिर वो करते हैं नहीं करते हैं, वो दैट्स द थिंग। यहाँ तो वी कुड क्रिएट आवर ओन फंक्शन, वी कुड वर्क ऑन इट। So still you have given 16 hours in a day.
हाँ, to practice it. because at that moment I had started one startup, and unfortunately it failed. So I was free at that moment. Okay. So I started to learn this data analytics, and I didn't have any path. What should I learn first and what should I learn later on? So it took very long time because I had to create my own script and everything. Because I was not from the IT background, so it was very difficult for me. So same with us also. We are also No, not no. from the IT background. You are getting the instruction from me. You have an instructor, you have a guidance. I had to learn myself ना everything. अब जैसे बताया, मैंने आपको बताया वेक्टर क्या है, मुझे वेक्टर को ही समझने में 15 दिन लगे। समझ रहे हो आप? उसको समझने में ही 15 दिन लगे। सर आपने स्टार्ट किया वेक्टर, तो वेक्टर मुझे भी नहीं आया समझे, फिर आफ्टर दैट व्हेन यू स्टेप बाय स्टेप बताया तो आई मतलब रिलेट किया, अच्छा वेक्टर ये है। हाँ, वेक्टर क्या, हर कॉलम जो होता है ना उसको अपन एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं बस। अब उसको मुझे 15 दिन मुझे टोटल समझने में लगे कि वेक्टर क्या करता है, क्या क्या हो सकता है उसमें, वो डेटा फ्रेम में कहाँ होता है, क्या वहां तो कहीं नहीं दिया था कि वो कॉलम होता है, वो एज ए वेक्टर हम लोग ट्रीट करते हैं। बट आई कितना टाइम मतलब स्पेंड करना पड़ेगा पर डे बस इफ आई वांट टू प्रैक्टिस इट? 2 आवर्स आपको देना है। 2 आवर्स तो अपना क्लास का रहेगा, सेकंड डे 2 आवर्स आपको उसके जो भी असाइनमेंट है उसको रन करके देखना। ओके। आपको जो स्क्रिप्ट दिया रहेगा वो स्क्रिप्ट रन करना है और उसमें कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो आपको रन करके सॉल्व करना है। डेली 4 आवर्स वी हैव टू स्पेंड ऑन दिस? नो, डेली 2 आवर्स, अल्टरनेट डेज है ना। अल्टरनेट डेज। आज आपने 2 घंटे पढ़ा, अगले दिन 2 घंटे वही टाइम पे आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। Got it? और सर टाइमिंग, व्हाट वुड द टाइमिंग ऑफ द क्लास? टाइमिंग आप लोग डिसाइड कर लें। यदि ये दिन का टाइम चलता है, आप लोग यदि इसमें कंफर्ट है तो ये रख लेंगे अपन। ओके। यदि घर से ही हैं आप लोग काम कर रहे हैं तो 2 to 3:30 इज ओके, 2 to 4। So as of now I am a homemaker. So I can spend in late night or in the early morning. Okay. तो we will decide Okay, yeah. all together कि भाई कौन कौन अभी इंटरेस्टेड है, ये पता चले तो फिर टाइम का डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम रखना है, है ना। तो वो अपन डिसाइड कर लेंगे, सबको मिलके टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, सबके लिए सुइटेबल हो जो भी आ रहे हैं इसमें, है ना। अभिषेक जी आप हैं इधर? हाँ सर, मैं यहीं पर सुन रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है सर, कर पाएंगे आप? गॉड विलिंग सर। और ये एक और रीनेम नहीं हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है सर। शी इज माय प्रेरणा यार। Yeah. प्रेरणा प्लीज। हाँ जी सर। प्रेरणा, ओके। अच्छा, आपका वो आया भी था, मैंने हाँ, नंबर भेजा। ओके, प्रेरणा गौरव नहीं, प्रेरणा मलिक। ओके। आपको प्रेरणा गौरव, अच्छा वो उसमें है, मेरा अपग्रेड में है एक बैच में भी। तो आप लोग डिसाइड कर लें कब से स्टार्ट करना है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो टाइमिंग का आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। सैटरडे संडे अपना ऑफ रहेगा क्योंकि सैटरडे संडे मेरा जो है अपग्रेड में सेशन रहता है। तो अपन जो अल्टरनेट डेज रखेंगे, मंडे, देन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इट वुड बी बेटर आई थिंक। ना, और संडे फिर अपन एक मैं सोचूंगा कि उसमें कुछ अपन बीच में एक आध दिन 1-to-1 सेशन बीच में लेंगे, महीने में एक ले लें या 2 ले लें, 1-to-1 सेशन 45 मिनट्स।
क्योंकि क्या होता है कई बार ग्रुप में आप लोग पूछने से झिझकते हैं कुछ चीजें। तो 1-to-1 सेशन में आप लोग, मैं स्लॉट डाल दूंगा, उस स्लॉट में से आपको बुक कर लेना है। तो 1-to-1 सेशन में आपके जो भी डाउट्स होंगे, है ना, कि वो आप पूछ सकते हैं वहां पे। कई बार मैंने देखा है, क्योंकि यही प्रोसेस, यही टेक्निक हम लोग अपग्रेड में भी यूज करते हैं 1-to-1 सेशन में, है ना। 45 मिनट्स के 1-to-1 सेशन रखते हैं, महीने में एक बार रखते हैं पर मंथ। बाकी तो क्लासेस चलती हैं वीकली। सर आप एमपी से हैं? हाँ, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, आप इंदौर से हैं, ओके। ओके सर, इंदौर में कहाँ से है सर? इंदौर में महालक्ष्मी नगर। महालक्ष्मी नगर, ओके। हाँ। सो मेरे पेरेंट्स विजयनगर में। पहले मैं विजयनगर में ही रहता था संगीता जी, मैं अच्छा। 74 स्कीम में था। ओके। हाँ, वहाँ 74 में ही रहता था पहले मैं, फिर इधर 74, यहाँ आ ओके। गया। सर मेरे विजयनगर 54 स्कीम शेखर एजेंसी है। अच्छा अच्छा, हाँ, शेखर एजेंसी नाम से। फिर शादी के बाद यहाँ अहमदाबाद में हूँ सर मैं अभी। अच्छा, तो अभी आप कड़ी फाफड़ा और वो जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं। टोटल गुजरातन हो गई हूँ। आई एम ऑल्सो गुजराती, यू नो दैट। नो सर, क्या बात है, आप कहाँ से फिर गुजराती? मैं काठियावाड़ से हूँ, भावनगर से। महुआ करके जगह है जहाँ अपने कौन से बाबा है ना, अपने क्या नाम है, मुरारी बापू। महुआ। महुआ महुआ मुरारी बापू महुआ का महुआ। गांव। हाँ, मुरारी बापू, हाँ हाँ हाँ, हाँ। मुरारी बापू का गांव और आशा पारिक का सौराष्ट्र गांव। से। आशा सौराष्ट्र पारिक से। भी महुआ की थी, मालूम है? हाँ हाँ हाँ। आशा पारिक जो हीरोइन थी, अभी है, वो काफी बुजुर्ग हो गई है, वो भी हाँ हाँ। महुआ की थी। ओके। बेसिकली वी आर फ्रॉम देयर, और माय फादर शिफ्टेड टू भोपाल। ओके। Before 11-12 years I shifted to Indore. ओके सर, इससे तो काफी फैमिलियर फीलिंग हो रही है नाउ। होता है ना। I'm more, इट्स गुड। हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं टाइमिंग्स का। हाँ, टाइमिंग आप लोग And- डिसाइड कर लें, है ना, हम्म। वो फिर अपन करते हैं प्रोग्राम। हाँ, रित्या जी आप हैं वहाँ? सर हाँ मैडम, सो वाइंड अप करें इसको, आप लोग डिसाइड कर लीजिए फिर टाइमिंग वगैरह का, यस सर, है ना, ग्रुप पे Yeah. और जैसे भी है। ठीक है, और कब से स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक्स ओके एवरीवन। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। रित्या आप रुक रहे हैं? हाँ